I am Dr. Sanjay Mahajan. I'm a senior consultant physician and intensivist at Kailash Hospital, Noida, Sector 27. And today we are going to discuss on an important topic on, HIV and AIDS, which is a very, I think, stimulating and eye ear opening, and everybody tends to has a curiosity about uh, still knowing about what is HIV, what is HIV, who's prone to HIV infection, how it can be prevented, what are the early signs of HIV infection, and if at all there is some prevention, post-exposure, pre-exposure, and what about the therapeutic part of HIV infection. Uh, जैसे मलेरिया के बारे में सबको पता है, डेंगू के बारे में यू हैव फीवर, यू गो टू द हॉस्पिटल, प्लेटलेट्स, यू मॉनिटर प्लेटलेट्स, उसी तरह इस डिजीज की सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में भी एजुकेशन हैज टू बी स्टिल मच मोर वर्ल्ड वाइड. पहले से काफ़ी अच्छी अवेयरनेस आ गई है, बट स्टिल there are many lacunae in the understanding of HIV and AIDS infection. So basically पहले समझने के पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एड्स वायरस एक वायरल डिजीज है, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, जो कि enters our body through primarily three routes. Or the moment it enters our body, it goes and attacks our immune system producing factory, और वो हमारी इम्यूनिटी तोड़ता है. जहां हमारी इम्यूनिटी टूटती है, वी टेंड टू बिकम इम्यूनोडेफिशिएंट. जहां हमारी इम्यूनिटी एकदम टूट जाती है, और वी आर प्रोन टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे मेरे को सर्दी जुकाम, HIV वाले को निमोनिया. किसी चीज से मुझे छोटी इन्फेक्शन होगा जो कि सेल्फ लिमिटिंग होगा, हमारी बॉडी उसको फाइट करके ठीक कर देगी. बट HIV जिसके अंदर एड्स आ गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, he is unable to build up an immune response और उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता. Medicines also don't work, and therefore a small little infection can become very fulminant and life threatening. So this is how the AIDS virus works into the body. Now how does it get into the body and who is prone to that? तो पहले तो हमें जानना है कि इसके तीन लोग होते हैं. एक तो ब्लड प्रोडक्ट्स, जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं या जो ब्लड रिसीविंग पेशेंट्स होते हैं. बोथ आर एट रिस्क अगर हम अनस्क्रीन ब्लड यूज कर रहे हैं. नंबर टू, नीडल स्टिक इंजरी. जैसे HIV कंटामिनेटेड नीडल्स इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर हमारे को भी, डॉक्टर्स को भी नीडल प्रिक हो जाती है या नर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को होती है, तो देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग HIV, ट्रांसमिटिंग HIV इन्फेक्शन. द थर्ड रूट इज by dental visits. Now suppose you go for dental visits, again you are exposed to instrumentation, blood आता है, उसमें blood से instrumentation होता है, तो again the chance of virus getting into your bloodstream is possible. Number two, unprotected sex, which is the most commonest route, and हमें लगता है कि it's just a vaginal sex which has to be protected, यानी condoms करो and then you do not have risk of HIV infection. But just remember that even anal sex and oral sex can lead to transmission of HIV virus, और उससे भी हमें HIV infection हो सकता है. That's one. And the last one is that pregnancy, mother and child, mother to child. अगर mother is infected, it can go on to the child, transmit हो सकता है through blood, and it can get transmitted during pregnancy, during labor, and तो इसीलिए जितने pregnant women who are HIV infected have to, the child need to be screened for HIV infection and taken care accordingly. Now, having understood that what is the root of HIV infection, that the HIV virus goes into the blood and it hits the immune system, तो जो पहले इसको जो HIV हम लोग बोलते हैं, तो HIV is human immunodeficiency virus, but the disease caused by it is called AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. How do we फिर बात क्वेश्चन आती है कि अब हमें हो गया, कैसे पता चले कि मुझे है कि नहीं HIV इन्फेक्शन? कोई भी चीज हमें बता नहीं सकती कि हमें HIV इन्फेक्शन है कि नहीं. बट यस, आवर रिस्क बिहेवियर्स, सपोज आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर, सपोज आई एम अ कमर्शियल सेक्स वर्कर, सपोज आई एम अ pregnant lady who's HIV positive, suppose I have had multiple dental visits, ये सब high risk अगर factors present है, तो you are prone to HIV infection at any point of time. So the best way and the only way is to test for HIV infection. And there are only two tests available, the ELISA HIV and 1 and 2. And if there is ELISA HIV 1 and 2
अगर पॉजिटिव आता है, it has to be confirmed with a Western blot test. So basically, blood test is the most important test for diagnosing HIV infection. Number one. Number two, जो HIV वायरस अंदर जाने के बाद और जो सिम्टोमेटोलॉजी के बीच में क्या पीरियड होता है, हमें कब तक डर लगता है, तो ऐसा होता है जब भी कभी वायरस बॉडी में जाता है तो देयर इज ऑलवेज एन एक्यूट वायरल सिंड्रोम. तो एक्यूट HIV इन्फेक्शन करके एक फेज आता है जो कि नॉर्मल एक एक्यूट वायरल डिजीज को मैनिफेस्ट करता है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी वायरल डिजीज, इन द फॉर्म ऑफ मलेज, फीवर, बॉडी पेन, nausea, fatigue, you know, and listlessness, not feeling well, body aches, so headaches, ये सब चीजें flu-like syndrome can come in, and that is usually a self-limiting period. After this, what happens is the phase of clinical latency. This is a very 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 bad phase where actually इसके बाद आपको पता भी नहीं चलता अंदर वायरस है, and you are highly transmissible. यानी अगर आपसे किसी का सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो देन यू आर ट्रांसमिटिंग द वायरस, एंड दैट इज अ बैड फेज फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, एंड यू आर नॉट फेसिंग इट, बट द वायरस एक्चुअली हैज एंटर्ड योर इम्यून सिस्टम एंड इट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग द इम्यून सिस्टम, एंड दिस इम्यून सिस्टम ब्रेकिंग यूजुअली टेक्स about 3 months to a year of time to then manifest as your AIDS, acute acquired immunodeficiency syndrome. Once AIDS diagnosed होता है, that means you develop clinical symptomatology of AIDS. इसमें भी क्या होता है कि there is एक CD4 काउंट होता है बोल के, वो CD4 काउंट हमारा जो इम्यून सिस्टम को बताता है कि कितना केपेबल रहा है. तो CD4 काउंट जब 200 के नीचे आने लग जाता है तो हमें वेरियस सिम्टम्स ऑफ एंड साइंस ऑफ HIV इन्फेक्शन आने लग जाता है, एंड दैट इज CD4 count at 200, then it breaks down and drops to 150, then it comes down to 100, then it comes down to 50. And ये जो CD4 count drop होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी का लेवल डिस्ट्रक्शन कितना है और हम क्या क्या इन्फेक्शन को प्रोन हो सकते हैं और क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं, वो उसमें मैनिफेस्ट होती हैं. And at CD4 count of 0, you are absolutely prone to every infection and fulminant infection, and you could die because of one of these infections. तो बेसिकली क्या होता है कि हमें जो आइडेंटिफाई अपने आप को करना है, पहले तो हमें अपने हाई रिस्क बिहेवियर को ध्यान में रखना है, और हम अगर लगता है कि हमने कुछ ऐसा कुछ चीज किया है तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे कि दैट हम जो ब्लड यूज करें वो हम स्क्रीन ब्लड यूज करें. नंबर 2, once we started using screen blood, अच्छी क्वालिटी का ब्लड यूज करें so that blood to blood transfusion is avoided. Number 2, needle stick injuries to be avoided. Number 3, डेंटल विजिट्स में भी हम अच्छी जगह में, प्रॉपर जगह में डेंटल अपने विजिट्स करें, जिससे हमें वी आर अवेयर दैट द थिंग्स हैव बीन ऑटोक्लेव्ड एंड स्टेरिलाइज्ड एंड दे आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन इनटू स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. Regarding sexual contact, well, let me tell you, single condoms many times cannot prevent transmission through vaginal route or in an anal route. So many times a double, if you are going to a commercial sex worker, so that means then it is better to use a double condom rather than a single condom. That's one. And let me tell you, the foreplay part, even coming in contact with the genitals, उस समय भी ट्रांसमिशन होता है. अगर वो जो जूसेस का स्प्रेड एक दूसरे को कांटेक्ट होता है उसमें भी HIV वायरस होता है. तो योर if you are into a relationship with a girl or a boy who you're not aware of the status of the person, so it is better to wear a condom right from the beginning. And if it's a commercial sex worker, well, definitely double condom works better. The other thing is, we usually believe that oral sex and anal sex do not cause the transmission of HIV virus, which is absolutely wrong. And in fact, oral sex also causes transmission of HIV virus. So this has to be also prevented. And regarding mother to fetal transmission, yes, अगर आप एक mother है जो HIV infected है, आप अपने एक HIV center को definitely संपर्क करें. तो they have modalities of taking care so that the child
is taken care right after the delivery, so that आपका वो जो viral spread can be prevented and they could save the child of a viral infection, HIV infection. This is regarding this. अभी question बाद में. Now, once we have understood how to prevent and हमने समझ लिया कि क्या होता है, signs and symptoms कैसे आते हैं, basically मैं वो उन signs and symptoms के details में नहीं जाऊंगा, because it is very difficult to explain in normal language, common language, because ये जो diseases हैं, ये एक abnormal manifestation of normal diseases होता है HIV infection में. So basically once you have understood, एक बार हमको HIV infection हो गया है, तो जो clinical latency phase है, वो बीच में हम अगर उसको rectify कर सकें, तो we could prevent an acute HIV infection going into from acute infection to and a full blown AIDS. So ये समझने के बाद एक और चीज हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये जो इसमें ना दो प्रकार के प्रोफाइल एक्सिस हैं, जो हम होता है एक प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस. अगर हमें डाउट है कि हमने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया है, या हम कुछ दिन के लिए हम ऐसे वर्कर हैं जहां पे हमारे को ब्लड हैंडलिंग है, जहां हमको नीडल स्टिक इंजरी होने का डर है, तो देयर आर वेज वेयर वी कुड डू अ प्रोफाइल एक्सिस. प्रोफाइल एक्सिस मतलब प्रिवेंशन, एंड दैट इज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस. पोस्ट एक्सपोजर मतलब अगर हमारी एक्सपोजर हो गया, नीडल स्टिक इंजरी हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, तो उसके विद इन 5 days अगर इफ वी स्टार्ट दैट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, देयर इज अ चांस दैट द वायरस विल नॉट सेटल इनटू योर बॉडी. वो अंदर जाएगा बट सेटल होने नहीं देता, उसके पहले ही उसको डिसिपेट कर देता है. सो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस. और इसके लिए HIV सेंटर में आप संपर्क करेंगे at the proper time. जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस होता है, वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट होता है, जो कि आपको डेली दिया जाता है, या एक इंजेक्शन होता है जो कि हर 2 महीने दिया जाता है जब तक आप हाई रिस्क जोन में रहते हैं. दैट्स प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस विच हैज टू बी, कोई अपने आप नहीं, वो एक HIV सेंटर पे जाके प्रॉपरली किया जाता है. एंड रिगार्डिंग पोस्ट एक्सपोजर, वो भी HIV सेंटर पे जाके किया जाता है, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन उस पर नहीं करते. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस में एक दवाई आती है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन होती हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेनोफोविर एंड एंट्रोसिटाबिन. ये दोनों टैबलेट की एक कॉम्बिनेशन आता है. इसके साथ एक टैबलेट और आता है रेटिग्राविर करके होता है, वो उसके साथ थर्ड ड्रग ऐड किया जाता है. तो दैट इज पोस्ट वायरल प्रोफाइल एक्सिस में हमें देते हैं. इतने डिटेल में आप ना समझे सर, इतना समझ ले. प्री एक्सपोजर अगर आप उस ग्रुप में फॉल करते हैं तो संपर्क करें. और पोस्ट एक्सपोजर होता है, अगर होता है किसी से गलती, कोई ब्लड, कोई डेंटल विजिट, या कोई हम सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है, तो हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस विद इन 5 days ले लें, तो वी माइट एस्केप an HIV infection. So having understood what is an HIV infection, how can we get it, and how can we prevent it, and if we do not prevent it, which phase is the worst phase, the clinical latency phase, and what is the full blown AIDS. जब AIDS आ जाता है तो full blown AIDS जब दिखने लगता है, तब it is a marching disease. फिर वो मार्च करने लगता है, बिकॉज आपकी वो फैक्ट्री को हिट करने लग गया है, इम्यून सिस्टम को. तो एंड दैट इज एक्चुअली मॉनिटर्ड, treatment is monitored, and stage of HIV infection is also monitored with CD4, CD8 counts. Various or blood tests होते हैं, और higher level of tests होते हैं which are done at HIV centers. I think with this एक concise मैंने आपको जितना बता सका, I think ये आपके लिए काफ़ी है. अगर इतना आप समझ जाए कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कब आपको चांसेस हैं कि आपने पिकअप कर लिया है, और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि ये चीज़ हम पिकअप ही ना करें, तो ये नौबत ही ना आए हमको इसकी ट्रीटमेंट की. And now I think I see a lot of questions flashing onto the thing. Let me see if I can answer a couple of them. और अगर बाई चांस किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो नथिंग टू वरी. व्हाट हैपेंस इज हम इन सारे क्वेश्चंस की नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको सारा डिटेल में आंसर देंगे, और उसके बाद भी कोई रहेगा तो यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट, एंड the hospital and everybody here is actually free to actually discuss with you and guide you to the right direction. Now I'll go through the questions.
Lisa Dev says, what is the symptoms of HIV? I think I've already spoken at length on the symptoms of HIV. And as I said, there is no symptoms of HIV. And HIV is just an acute viral syndrome followed by a clinical latency phase and followed by AIDS, HIV, full-blown AIDS. वो जब AIDS में आ जाते हैं तो आप opportunistic infection हो जाता है, molluscum contagiosum, condyloma acuminata, oral candidiasis, persistent generalized lymphadenopathy. ये सब जान के कोई फायदा नहीं है अब इतने वर्ड्स. बस ये है कि एड्स फुल ब्लोन में फिर वो डॉक्टर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा. जो एक्यूट प्रॉब्लम हुई उसी समय एक वायरल सिंड्रोम हुआ, आपको लगा आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, जेनिटल अल्सर हो गया, कोई फोड़ा हो गया, कोई ब्यूबो हो गया, कोई स्वेलिंग आ गई ग्रोइन में, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, एचआईवी टेस्ट करें, वीडीआरएल करें, जो भी टेस्ट होते हैं उसको करके एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की तरफ बढ़े अगर अपने कमर्शियल सेक्स वर्कर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है. तो इट्स ऑलवेज गेट टू डू अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रादर देन वेट and sit over it. And what is the difference between, the next question is, what is the difference between HIV and AIDS? I've already told, HIV is actually an infection. HIV is the virus which causes human immunodeficiency virus, and AIDS is a full-blown disease. Can it transmit through breastfeeding, doctor? Yes, it could be transmitted through breastfeeding. As I said, the maternal child transmission could take place during pregnancy, during labor, during breastfeeding. Can it, the next is, thank you sir for answering my queries. Neha Chan says, it's good information. Mosquito bites, no. Mosquito bites do not cause a risk of HIV infection. Is there any risk of getting the virus during donating or receiving blood, and how can we ensure we don't get infected? This is the first thing that I really pointed out, that not only receiving blood, blood donors, you know, people who regularly go to donate bloods are actually high risk individuals to get HIV infection. So repeatedly screening of these patient people should be done. और blood donors also, yes. कई patients होते हैं जिनको blood की हमेशा जरूरत पड़ती है. They could be because of aplastic anemia, they could be कोई acute infection, कोई कुछ कारण से जिसको भी blood transfusions मिल रहे हैं वो अपने ध्यान रखें कि अगर आपको एक fever like syndrome आता है तो एक HIV infect अपना check करा लेना चाहिए. That should be done, you know, every 3 months for about a year and then forget it. And donating and receiving, and how can we prevent? Well, you should always use authorized bloods which have been screened for HIV infection. They are actually safe and actually do not transmit HIV infection. They should be taken from proper authorized center where they cost actually more because they are tested. जो cheaper वाले होते हैं उसमें इतना बड़ा रिस्क है कि आपकी जान जा सकती है. तो काइंडली कभी भी वो वाले ब्लड का इस्तेमाल ना करें जो कि स्क्रीन ना हो, क्योंकि आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवाएंगे. And is there any cure or vaccine for HIV? I said, oh well, this is a very big question, and you know, I'm not the right person to answer about the latest vaccines. But yes, as I said, there was a time about 25 years back, I was in JJ Hospital, Mumbai, which had an AIDS unit. I was working in that unit for about a year, and उस समय 25 साल पहले वो एड्स सेंटर वाज रन बाय टेक्सास यूनिवर्सिटी, एड्स रिसर्च कंट्रोल प्रोग्राम आज भी वहां पे है वो. तो वो पहला सेंटर था इंडिया में एड्स जो आर्कन ने खोला था. जब उस समय हमने शुरू किया था देखना पेशेंट 25 साल पहले, तो बस बात थी कि एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, एचआईवी पॉजिटिव हो गया, हम फुल ब्लोन एड्स देखते थे. और लॉयर्स, डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे पर्सन जिनको जो एड्स बन जाते थे, जो फुल फ्लेजेड एड्स में आ जाते थे, उन्हें अब उनके घर वाले वहां भर्ती कर जाते थे जीटी हॉस्पिटल में, और वहां पे वो दे वर सपोज्ड टू डाई इन. और मेरे ही टेन्योर में मैं देखता था, जो मैं 1 साल के टेन्योर में था, एक हेल्दी इंडिविजुअल आया, विद इन 1 ईयर दे वर डेड. एंड वो क्या होता था, CD4 काउंट हम देखते थे गिरता जाता था और एक एक तरह का इन्फेक्शन उनको होता जाता था. वही जो पेशेंट चल के आया था, क्योंकि घर वाले उनको वहां छोड़ जाते थे, क्योंकि आइसोलेट कर देते थे, एंड दे यूज्ड टू डाई बिकॉज देयर वाज नो ट्रीटमेंट, बिकॉज डायग्नोसिस हैड स्टार्टेड देन, identification of the various symptomatology was started 25 years back. Over the period of time, HIV centers have been developed over the country where they are able to identify with much better advanced diagnostic tests and faster. Number one. Number two, there are antiretroviral medicines which were never there 25 years back, which have actually come in as a pre-exposure, post-exposure prophylaxis. Number two, and once suppose you have an HIV infection and you are after that acute HIV infection, if you are in the clinical latency phase,
वो जो मैं बोलता हूँ, जो बीच में एक फेज होता है जब आप एकदम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं है, एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग ब्लोन ऑफ बाय दैट वायरस, और उसके बाद जब एड्स हो जाएगा फिर बातें आगे बढ़ जाती हैं। तो हम अगर इस क्लिनिकल लेटेंसी फेज में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें, ऐसे ड्रग्स यूज करें, हम HIV सेंटर से बिना हिचक के संपर्क करें, तो प्रोबेबली हम वो दवाई लेने से क्या होता है, हमारे अंदर की वायरस मरने लग जाता है और वायरल लोड कम हो जाता है और हम वायरस ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं। तो हमारे स्पाउस के लिए भी अच्छा होता है कि हम वायरस ट्रांसमिट नहीं करते। सो वी स्टॉपिंग ट्रांसमिशन, वी आर ट्रीटिंग आवरसेल्फ। एंड व्हाट हैपेंस इफ वायरल लोड कम हो जाने से हम वो जो क्लिनिकल लेटेंसी फेज है, हम उसको बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं। हम उसको दवाई खा करके क्लिनिकल लेटेंसी फेज में रह जाते हैं, हम एड्स के तक पहुंचते ही नहीं। एक्यूट से एड्स, एक्यूट HIV इन्फेक्शन से हम एड्स तक पहुंचते नहीं, हम क्लिनिकल लेटेंसी फेज में ही रह जाते हैं। वायरल लोड इतना कम हो जाता है। सो वेदर यू कॉल इट अ क्योर और यू कॉल इट अ कंट्रोल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम एड्स तक जाते नहीं है। और जो पेशेंट एड्स तक चले भी गए, वो भी अगर हम, उनकी भी दवाइयां हैं अभी जो दे सकते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा है वो रिवर्स हो गए, उनके CD4 काउंट जिनके 100 तक आ गए थे, वो वापस 200-250 पे आ गए हैं। द मोमेंट दे कम अप, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बंद हो जाते हैं, दे स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ, और वो ट्रांसमिट करना बंद कर देते हैं, अपने वाइफ बच्चों के साथ अच्छी तरह जी रहे हैं। सो 25 साल में ये चीजें हुई हैं, तो इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। सो एंड रिगार्डिंग HIV वैक्सीन्स, आई थिंक 8 centers are the right thing, because they were already always on investigations. अभी तक आए हैं कि नहीं, I am not aware of it, and most likely they have not still come in, but yes, any day you will hear a good news about that. And thank you for answering. Thank you for answering. How often should I be getting tested? Is there any test treatment for newborn? I said if there's a newborn, then you have to be at an AIDS center and they would really identify it and treat it. How to stop transmission during breastfeeding? Breastfeeding is not allowed with infected HIV mothers. What kind of food should you avoid? Food is, everything is fine. And food, yes. फूड अब वो सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर होता है। अगर मेरी CD4 काउंट 50 पे आ गया है, तो मैं तो इम्यूनिटी पे टूटा पड़ा हूँ, तो कट फ्रूट, वेजिटेबल, जैसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, तो मैं तो अगर कट फ्रूट सलाद खा लिया तो मेरे को तो जो इन्फेक्शन हमें नहीं होता वो तो उनको हो जाता है। अभी हम भी खाते हैं तो डायरिया हो जाता है ना, और वो ठीक हो जाता है बिकॉज हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। मगर अगर उनको हुआ तो वो तो मर जाएंगे, बिकॉज वो तो कंट्रोल, उनके पास इम्यूनिटी नहीं है कंट्रोल करने की, एंड मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन वुड नॉट वर्क ऑन देम। सो फॉर देम, उनकी निमोनिया, उनके डायरिया, उनके लिए दवाइयां ही अलग बनी है, वो HIV सेंटर्स पे ही ली जाए। डोंट ट्राई टू गो टू नॉर्मल हॉस्पिटल्स फॉर HIV इन्फेक्शन, इट हैज टू बी ऑथोराइज्ड HIV सेंटर्स। How accurate are home HIV tests? As I said, pap smear doesn't detect HIV, number one, that's your question. And HIV test, home kit test, they are all screening tests. Finally, it is HIV ELISA and HIV Western blot, which actually confirms HIV. How often chhod dijiye? Thanking for, I think these are the couple of questions which I have answered. I know there are ample of questions which are still lying, and probably many people do not want to come into the Facebook to क्या पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं. Please come out, come up, ask questions, educate yourself. It's a normal thing. We have fought it over 25 years. पहले मैंने जैसे बताया साल में लोग मर जा रहे थे HIV होके, आज तो we hardly see people dying of HIV until unless you've actually really neglected it. So there are HIV centers and you have medicines, and we have a very very silver lining to the HIV disease. तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप ये समझिए, अपने दोस्तों को समझाइए, और एक हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर अपनाइए, और ब्लड प्रोडक्ट्स को भी ध्यान से स्क्रीन कीजिए, और जो मदर्स इन्फेक्टेड हैं उनको प्रॉपर HIV सेंटर में केयर कराएं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय.